हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दैट ऑन संडे मैं लिस्ट अपलोड करने वाला हूँ जो अपकमिंग वीक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। द स्टॉक्स विच आई एम गोना वॉच। सो फर्स्ट इज केसोरम। एंड जैसे कि केसोरम देख रहे हो आप, इट्स ऑन ऑल टाइम हाई। एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन जिसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। बट इफ इट गिव्स अ परफेक्ट ग्रीन कैंडल, वन कैन हैव अ गुड एंट्री ईयर। सेकंड इज टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में ऑलरेडी एक एंट्री था यहाँ पे जो मिस हो चुका है। सो इट्स जस्ट इन माई लिस्ट टू वॉच। लाइक आई एम नॉट लाइक मूव दे सकता है बट देर इज नो परफेक्ट एंट्री। बट अगर अगर देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास एंट्री ले सकते हो। हीरो मोटर कॉप इज द वन विच इज गिविंग द मूव। एक्चुअली देखा जाए तो टी ऑटो सेक्टर इज लिटिल कंफ्यूजिंग राइट नाउ बिकॉज इफ यू सी टाटा मोटर्स एंड सम अदर स्टॉक्स जिन्होंने टॉप्स बना लिए है, एंड वन साइड टीवीएस मोटर एंड हीरो मोटर कॉप आर मेकिंग न्यू हाई। सो बेसिकली इफ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो जिसमें मैंने दौलत एल्गो के बारे में बोला था, सो आई थिंक दैट दिस कैन हैपन द सेम इन दिस हीरो ऑल्सो। दैट ये स्टॉक राइट नाउ ऊपर है, मे बी इट विल गो अप और एंड देन इट विल गिव लिटिल पुल बैक। एंड ये पुल बैक के टाइम पे ये स्टॉक लेना है। एंड इफ इट गिव्स अ गुड परफेक्ट एंट्री नियर द 20 मूविंग एवरेज, सो इट कैन बी द बेस्ट एंट्री। बट अदरवाइज अगर ये ना दे और ये अगर ये ना दे और अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट ले ले, इफ इट गिव्स अ गुड मोमेंटम फ्रॉम योर ओनली, so even you can entry from here also, according to your risk rewarding ratio, if it gives a good candle with good volume. Arvind is the stock which I am watching from long time. मैं यहाँ से एंट्री करने का सोच रहा हूँ, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम एंड आई थिंक द दिस इज द परफेक्ट टाइम। एक्चुअली आज एक टाइम भी था, एक मोमेंट था जब आई मीन ऑन फ्राइडे, जब ये स्टॉक लेने जैसा था बिकॉज सीइंग दिस बिग कैंडल विद गुड वॉल्यूम। बट इवेंचुअली आधा सेलिंग आ गया एंड इट ड्रॉ डाउन। बट आई से दैट इफ इट क्रॉस दिस लास्ट कैंडल हाई, सो वी कैन हैव अ गुड एंट्री। बिकॉज जब ये छोटा कंसोलिडेशन होता है एंड जब ये पार्ट पे एंट्री करते, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस दैट स्टॉक्स गिव द कंफर्मेशन विद गिविंग अ न्यू हायर हाई। लाइक जैसे कि मैंने ब्लू स्टार में लिया था एंट्री, वैसे ही या द थिंग इज दैट जो मेजर चंक था, जो मेजर दैट इंक्रीजिंग पॉइंट था वो नहीं मिलेगा। बट श्योरिटी विल बी द एट द पीक कि हाँ, कि ऑलरेडी क्रॉस। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है अगर मैं कल एंट्री करता और ये सेम टू सेम ऐसे ही थोड़े दिन तक चले रहे, लाइक कितने दिन तक चले रहे नो बडी नोस। बट हाँ, कि चलता रहता और मे भी नीचे जा सकता था। सो बेटर इज द थिंग दैट ये वन टाइम ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करे, and then we can take a entry according to your risk reward ratio. KPIL KPIL is also at the same place. I think कल KPIL में अच्छा एंट्री था जो मिस हो गया। एंड लाइक अभी लगता तो नहीं है कि कल एंट्री करने मिलेगा, बट लेट्स सी बिकॉज द थिंग वाज दैट ऑन थर्सडे it gave the support, and at Friday it was having a zero volume in negative side. So I think maybe there are chances that it can go a gap up. But if it starts from at this point only, so we can take an entry on Kalpataru. Gujarat P-Pow is the same, like you know उसमें एक पेनेंट टाइप ट्रेंड अपना, यू कैन से ट्रायंगल और पेनेंट वैसा बन भी रहा है। So if you know the triangle, because when I started trading, मैं पहले triangles in chart patterns बहुत यूज कर रहा था। So basically the thing is that if it goes down, so ignore it, but if it cross this trend line, and so you can make a entry with a good risk reward point. So yeah, that's about Gujarat Pipao. Chansar is the start which I
मैंने इसके इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया था, बट द टाइमिंग वाज बैड, सो उतना रिटर्न मुझे मिला नहीं, एंड लाइक 50-60% गेन मैंने बेच दिया था। बट आई वाज फुलिश एट दैट टाइम, मैंने बहुत मिस्टेक की थी तभी। बट राइट नाउ आई थिंक इट्स नॉट नियर ऑल टाइम हाई, yeah, it's in all time high only, but you know 589 was the last high made, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन चालू हुआ। सो इफ यू कैन सी लाइक द स्टॉक्स विच आई एम राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग, उसके लिए आइडिया तो सेम ही है कि जब तक वो प्रेजेंट यू नो दैट ऑल टाइम हाई को क्रॉस ना करे तब तक एंट्री नहीं लेनी है। बट यू नो देर इज़ अ वन मोर थिंग यू कैन डू इट, दैट यहाँ पे 30-40% इन्वेस्ट कर दिया at this time, that you don't go, you don't you know you don't regret while here, like अगर कल फ्राइडे को इन्वेस्ट कर दिया रहता, and if it goes up it's okay, if it goes down is okay, but you know when it cross this line, मेरे कहने का मतलब है, so this is a trend line, even same that pennant chart बना रहा है यहाँ पे भी, if you see, हाँ, सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंट्री करने के बाद अगर वो इसके नीचे जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ये लेवल्स पे, सो इट्स ओके, यू हैव टू एग्जिट विद दैट 40% मनी यू हैव पुट इन। बट इफ यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, इफ यहाँ से 40% के बाद अगर यहाँ तक जा रहा है 800 के लेवल्स पे, यू कैन गो टू 40 to 50, एंड वन इफ इट इज क्रॉसिंग ईयर from 820 800 to 820, you can go 70, and what if one if it is crossing here like 840, so you can go all in, राइट। द थिंग इज दैट यू रिग्रेट नहीं होगा, और रिग्रेट होने से वजह से साइकोलॉजी तुम्हारी खराब नहीं होगी। सो दैट्स माई प्लान, and that's how you know that I have read in book Mark Minervini's book. So he also trade in same ways, like it is hard कि बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, ग्रीडीनेस आ जाती है, बट you have to respect the chart, you have to respect the thing which is going on, and you have to take decision according to it. So my plan is that only if it happens like this, like only on the charts which are trading on all time high, because sometimes it goes like के यहाँ से ऊपर आ गया है, और then it crossing here and then again it is going in sideways. So if अगर वो उस टाइम पे अगर 50-20 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, so you have to book some profit, and if यहाँ पे 50 आ रहा है and it going down, so you have to take all the profit you are having, or maybe there will be some money which will be on break even, because last time मेरा इस the thing I made biggest mistake in last month was the NBCC and HBL power, and the thing is that HBL power पे तो मैं अभी भी भुगत रहा हूँ, NBCC में मैंने 50% प्रॉफिट बुक कर दिया था, बट द थिंग इज दैट बाकी का मैंने बुक नहीं किया, विच वॉज वेरी लेट। सो या दैट्स माई बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ अगस्त। कल्याणी, कल्याणी इज द वन, आई टेल माई प्लान इन कल्याणी। द थिंग इज कल्याणी के टाइम पे कौन सा स्टॉक लिया था मुझे याद नहीं है, सेम मूवमेंट ऐसा ही दिया था, विच वॉज द स्टॉक आई डोंट रिमेम्बर, इट वॉज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट कंपनी ओनली। सो द थिंग इज अभी तक जो हाँ, सो अभी तक जो वॉल्यूम आना चाहिए स्टॉक में वो आया नहीं है, एंड आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड जो बुक में यूज़ किया था, बट इट वॉज टॉट अबाउट दिस ओनली, दिस आर द साइड बार्स जिसमें वॉल्यूम्स कुछ नहीं रहता और जहाँ पे स्टॉक मूव नहीं करता है। सेइंग दिस साइड बार्स, चार्ट इज ट्राइंग टू सेइंग दैट बायर्स और सेलर्स कोई भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, बट राइट नाउ सीइंग द वॉल्यूम, if you see the volume, if you see the volume, sellers were exhausting at this place, and last four candles buyers were coming. So ये level पे buyers आ रहे हैं, and if buyers are continuously cutting this level, I think एक upside अच्छा सा देखने मिलेगा. Maybe this stock will take time. Maybe I don't know how much time it will take to break this all time high all time high price. It will take time, but it is a very best position to trade this stock,
Like same as I was explaining in Gen stock, I will prefer to invest like that in this stock also. And the second most important thing is that Kalyani is on a very good move. It is the thing it is right now is going is just a consolidation, because the biggest thing is that the stock, RVNL जब मैंने मई में ट्रेड किया था, so I regret because मुझे द माई साइकोलॉजी वॉज दैट फटाक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लो और अच्छा खासा लेके निकल जाओ, बाकी सब जो भी होगा देखा जाएगा। दैट आई वाजंट सीइंग दैट स्टॉक अगेन, जो कर रहा है वो करने दो। बट राइट नाउ आई शो यू द आरवीएनएल, जब मैंने मेरे बाइंग प्राइस से वो डबल हो गया है। सो इवन इफ आई हैड द 10-15 thousand, जो मैंने थोड़ा सा भी चंक मैंने रखा रहता है, सो इट विल इम्पैक्ट वेरी मच गुड ऑन माई पोर्टफोलियो। सो दैट आई मेड मिस्टेक, सो मैं अभी वो नहीं बनाने वाला हूँ। So I'm gonna invest small amount, and there will be time I will be like all in. So yeah, that is how I'm right now. I'm gonna make my strategy. Elicon is the best. I won't say anything about Elicon. कुछ कहने जैसा है नहीं. The chart is only representing the best thing right now, and it's बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है व्हेन आई वाज वाचिंग वीकली के स्टॉक कहाँ से कहाँ गया है। लाइक लास्ट टाइम उसने 350% मूव दिया था। लाइक 2006 से दिस 2008 पे हाई बनाया था, एंड दिस इज द टाइम ही ब्रोक दैट हाई ऑन 2022। सो आई थिंक देर इज अ रैली टू गो, एंड आई थिंक दैट कुछ नहीं तो कुछ नहीं 360 पॉइंट लाइक 800 तक का तो टारगेट रख ही सकते हैं if everything goes good. But my plan is to entry here only on Monday if I get the good point. First I have to see that I have funds or not. But if I am having अगर कुछ adjustment होता है, so yeah, I'll take an entry on Alicon on Monday. I think this was the last. Yeah, this is the last stock, and that's it for today. And the stock I'll tell you about RVNL, the thing. हाँ, so here is the chart. If you see, मैंने that profit and loss अभी भी बना के रखा है। So my buying price was on this candle 271, and today's price is like 555, so you can see the difference। and मैंने उस टाइम पे स्टॉक को मैंने इसी कैंडल पे नहीं इस कैंडल पे बेच दिया था 373, which was rocking, but rocking part is much more। so now I am just waiting that ऐसा कोई चार्ट है so that I don't want to mix, भले uh, जितना मिले उतना, but I'll prefer that to be with that stock for some longer time। And that's it for today, and if you like my video, so please subscribe and like and share to your friends, and see you in next video. Bye bye.